सो हे गाइस व्हाट्सअप में वेलकम बैक टू मनोज एड ऑफिशियल। आज हम लोगों ने इस फोटो को एडिट किया है, जिसको हम लोगों ने सिर्फ लाइटरूम कलर ग्रेडिंग का यूज़ करके कुछ इस टाइप पे एडिट कर दिया है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोगों को कभी ऐसी एडिटिंग सीखनी है तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग अपनी फोटो को लेकर चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ पर जाने के बाद हम लोग को ये वाला टूल्स को यूज़ करना है। इसके बाद हम लोग फोटो को सेव करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। प्रीसेट इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके हम लोग सेटिंग को कॉपी करेंगे, फिर जाकर यहाँ से सिंपली इस पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग जो भी है अपने हिसाब से फोटो में एडजस्ट कर लेंगे। फेस को कितना ब्राइट रखना है, देन बैकग्राउंड कितनी लाइट्स रखनी है, कितनी सैचुरेशन रखनी है, सब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पर मॉडल का जो फेस है उसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्रश में, देन ब्रश में जाकर हम लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसकी आप लोग सेटिंग देख सकते हैं। करके इसको अपने मॉडल के फेस पर जो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देगा। यहाँ से जाएंगे हम लोग एक एप्टी लेयर ऐड करेंगे, इसको जाकर हम लोग मल्टीप्लाई पर रख लेंगे। कलर्स पर जाकर इसको रेड पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम लोग के लिप्स पर इसको अप्लाई कर देंगे।